Would you stay till the morning light, or would you follow me, or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning light? Before you turn away, I just want you to know that I didn't throw your stuff away. Before you make up your mind that I'm nowhere to find, I'm standing right here. I know that I told you we're over. I swear that I'm sober. Just listen, I miss you. And I know that I said all these things, but now when you're with her, I can see that you miss me. Would you stay till the morning light, or would you follow me, or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning light? Till the morning light. Till the morning light. Till the morning light. हम चले सुबह सुबह इन अनजान रास्तों में। मंजिल जैसा भी हो दोस्तों, सफर का मजा जरूर लेते हुए जाएंगे। Good morning everyone and welcome to my channel. Today we are planning to go one of the districts of Maharashtra, and it is called Mahabaleshwar, also called the land of strawberries. And अभी सुबह के बज रहे हैं अभी ऑलमोस्ट 8 और हम निकल चुके थे सुबह के 5 बजे। सो इट्स बेटर टू स्टार्ट अर्ली ताकि आप बहुत सारी जगह उस लोकेशन का वेंचर कर पाओ। वी हैव कवर्ड 90% ऑफ द जर्नी एंड वी हैव स्टॉप्ड एट बितल कामत हियर टू हैव आवर ब्रेकफास्ट। सो ये जो सीज़न है ना, दिस इज़ द विंटर सीज़न इन द मंथ ऑफ फरवरी। एंड इस टाइम पे जो राइप स्ट्रॉबेरीज़ है, जो फ्रेश रेड राइप स्ट्रॉबेरीज़ है, यही सीज़न है। एंड इफ़ यू आर कमिंग टू महाराष्ट्र एंड इफ़ यू आर पीपल लिविंग विद इन पुणे और मुंबई, राइट, दिस इज़ द time you should go to Mahabaleshwar. Not only the destination is good, but the road to Mahabaleshwar from Pune or Mumbai is also very smooth, very smooth. और हमारा भी ब्रेकफास्ट अभी रेडी हो गया, तो बाहर ही बैठने का प्लान कर रहे हैं। तो बाहर बैठ के 2 साइड खाएंगे। लेट्स कंप्लीट आवर ब्रेकफास्ट एंड इसके बाद कुछ किलोमीटर्स के बाद वाई आएगा एंड फ्रॉम देयर यू नीड टू टेक अ राइट टर्न टू पंचगनी। ब्रेकफास्ट इज़ डन एंड सुबह का सनराइज़ के साथ गरम चाय। जैसा कि मैंने हर बार बताया आपको पिछले वीडियोस में, दैट आई लव टू ट्रैवल, बट दैट वन थिंग विच आई लव द मोस्ट इज वंडर्स ऑफ नेचर, माउंटेन्स, लैंडस्केप एंड व्हाट नॉट। जितनी डेंजरस रोड्स मगर उतना ही खूबसूरत नज़ारा। तो थोड़ी सी स्किल एंड थोड़ा सा प्यार के साथ हम आगे बढ़ते गए दोस्तों। एंड आफ्टर ड्राइविंग वाइल हिली रोड स्टार्टेड। एंड वैसे तो सुबह उठना मुझे पसंद नहीं, बट अगर कोई मुझे बोले ऐसा नज़ारा देखने के लिए सुबह उठने को, तो बस नींद ही नहीं आती है। We will drive for some time and we will have to take the right turn from Y to reach Panchgani. We are finally in मैप्रो गार्डन एंड जो लोग महाबलेश्वर आते हैं मैप्रो गार्डन को मिस बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि आप देख रहे होंगे मेरे राइट साइड में जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे मैप्रो के जितने भी प्रोडक्ट्स है वो है, प्लस लेफ्ट साइड में यू कैन हैव स्नैक्स। ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ फ्रेश स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। एक्चुअली दिस इज़ पंचगनी, जो मैप्रो गार्डन जहाँ पे है, यहाँ से महाबलेश्वर का रास्ता शुरू होता है। एंड अभी हम लोग थोड़ा देर यहाँ पे रेस्ट करेंगे, फिर आगे की तरफ निकलेंगे। सुबह का टाइम है तो थोड़ा खाली भी है।
वेट कर रहा था, जिसमें फुल क्रीम, उसके बाद फिर से स्ट्रॉबेरी एंड देन अगेन आइसक्रीम। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये एक आइसक्रीम एक आपके लंच के बराबर है, बट इट इज़ हैविंग filled up with fresh strawberries and that is what Metro is famous for। और ऐसे जो फ्रेश स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम्स है आपको महाबलेश्वर में बहुत सारी जगह मिलेंगे। आप शहर से दूर आके यहाँ पे आप ये आइसक्रीम खा रहे हो, राइट, ऐसे जगह पे, एंड देन आपके बाजू में ऐसा फार्मिंग हो रहा हो। After having those delicious ice cream, we are now looking for our next destination towards Old Mahabaleshwar. Elephant Arthur Old Mahabaleshwar, ये तो है पास निकला। हाँ है। इधर क्या चालू है? इधर क्या चालू है? वो एलिफेंट टोर्नेडो वो बंद है। जहाँ पे लिया वो तो बोला चालू है। कौन सा? ये जहाँ से लिया वो बोला चालू है। और तो सिर्फ बंद है एक हफ्ते के लिए। मंदिर चालू है और इधर के पाउंड चालू। और वैसे तो 48 पाउंड है, खाली वो खुला नहीं सर, बाकी के पाउंड खुले। मेरा यहाँ रिकॉर्डेड है। उधर भी तो पर्ची काटा ना, फिर झूठ क्यों बोला वो लोग? पैसे के लिए रहेगा ना, झूठ बोल के फिर ले लिया। अगर पॉइंट है ना, वो बताएंगे ना, बंद है, सबको बता दे रहे हैं। नहीं, वहाँ पे अगर बोलता वो बोला 48 सीट छोड़ के सब खुला हुआ है, ठीक है, वैसा बोलता तो हम लेते ही नहीं। You may watch this thing if you're traveling to Mahabaleshwar. When you are paying for receipts taken near Venna Lake, since few things might be open and few closed, और बहुत confusion होगी। We have reached at a place called Ladwick Point, and this is just near to the main Mahabaleshwar town. If you are coming to Mahabaleshwar and if you are not going to Old Mahabaleshwar, just take the right from the bus stand and you will reach from there to Ladwick Points, and then you can go ahead and also reach to Elephants Point. If you go to Elephants Point, from there you can reach to cascades, and then you can also have a look at the strawberry farms. भीड़ तो नहीं है, वीकेंड है फिर भी भीड़ नहीं है। So let's take some cinematic shots of this place. Can I get a time lapse? But I'm not seeing the clouds moving. Let me try. Do this every day, and I'm still so amazed by you. Wind touching your hairs and the sunlight through the trees, kissing your cheeks. It was so mesmerizing. It's just us two, me and you. Views of the mountains were so gorgeous. Just feel so lucky. Still can't believe you love me. Guys, we are now near Venna Lake and यहाँ पे हमें एक रेस्टोरेंट खोज के मिला है। मेरे पीछे आपको नाम दिख ही रहा होगा। एंड इतना भूख लगा था कि हम लोगों ने बस जो पहला रेस्टोरेंट नॉनवेज रेस्टोरेंट है हम लोग वहीं पे घुस पड़े, एंड उम्मीद है कि खाना भी अच्छा ही होगा। तो अभी प्लान ऐसा है कि हम लोग लॉडविक पॉइंट से एलिफेंट्स पॉइंट तो जा नहीं सके क्योंकि टाइम बहुत हो चुका था और फिर फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लेने में टाइम चले गए थे। एंड अभी यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग अपना लंच करेंगे एंड देन मे बी वी माइट गो फॉर स्ट्रॉबेरी फार्म्स। यहाँ पे अभी हम लोग खाना वाना खाने के बाद ना ये सोच रहे हैं कि आसपास में स्ट्रॉबेरी फार्म ऐसा जाने को, तो किधर बोलेंगे आप? यहाँ सर ये साइड से जाओ आधा किलोमीटर। हाँ, वहाँ केटस पॉइंट के लिए उधर जाता है, उधर से वो उधर तो बोल रहे बंद है। पर स्ट्रॉबेरी जो फार्म जो है ना, हाँ वो उधर वो चालू है। है। अच्छा केटस फार्म जो स्टोरेज चला है। हाँ। अच्छा समझा। हाँ, ठीक है, अभी तो स्ट्रॉबेरी का ही सीज़न है ना, यही तो सीज़न है। यही से। ये पूरा मीठा होगा था अभी तो। हाँ, अभी तो लेट हो गया, बारिश था ना, हाँ। तो अभी सब चालू हो गया खेती स्ट्रॉबेरी। Okay, so we have reached the strawberry farm that I was looking for. But it's so good to see you. को पता ही नहीं चल रहा था कि हम कौन से लोकेशन पे जाए। If you just take left from the main road which goes to Venna Lake, it will bring to you this
Mount View Strawberry Farm, and this is beautiful. If you go towards Gates Point, you will be able to see so many restaurants which has these strawberry farms line by line. This is the strawberry farm that I was talking about, and this is the peak season for strawberries. There are many ripe strawberries. I can't believe you love me. I just feel so lucky. I feel like to pluck it and have it. You could see here more. Similarly here. यहाँ पे आप स्ट्रॉबेरी देखने का खाली मज़ा नहीं ले सकते, आपको खाना भी पड़ेगा। नहीं, ज़बरदस्त नहीं है, आपकी मर्ज़ी है। ब्यूटीफुल स्ट्रॉबेरीज हैंगिंग आउट जस्ट beside me, but also you have the opportunity to sit down there and directly get this strawberry served in your glass. लोग यहाँ पे बैठे हैं एंड अपना फ्रेश स्ट्रॉबेरी जो हमने देखा उसका आइसक्रीम का वेट कर रहे हैं, तो अभी आएगा तो मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ पे ये लास्ट हमारा विज़िट है और ये करके हम लोग यहाँ से निकलेंगे सीधा अपने घर की तरफ। एंड अभी इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 5 PM as I estimated, exactly 5 PM. So I think it would take maximum 4 hours to reach home. Since there are no other points left out, so we'll be leaving. So if you have not subscribed to the channel, please subscribe. If you have liked this video till now, please do like. If you want to see more virtual tours with me, through my eyes, through your eyes, sitting on a couch, having popcorn and sharing with your entire family, please do subscribe to the channel. Thank you so much. See you in this vlog. Bye bye. Take care.